Hi guys, welcome to Geek Haven's YouTube channel, something that didn't exist a week ago. We're basically starting our podcast today. This is basically the first episode, and I don't know what it's called right now, so I'm not going to be introducing it as something podcast. But this is the first episode. We're now trying to post weekly on YouTube, and yeah, here we are. So right now it's like 4 a.m. in the morning. We started this at 10 p.m. and this is still ongoing. And yeah, let's just see. Hopefully this gets done in this take. Hopefully. With me right now, I have Yasir, aka Folio 3 Product Manager. सही है यार On the other hand, I have Ovais, जिसकी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो रही और वो आज कारपेंटर का कॉस्प्ले कर रहा है. ड्रॉप आउट कर चुका. Okay, sorry boss. Finally. And in the background, I have Shazay and Wasif working the cameras and their entire duty that runs along with it. Alhamdulillah, they're very good at their job. And उनके भी पीछे I have Zain जो हमारे social media के लिए जो snippets post कर रहा होगा साथ साथ. And he helped along with the जुगाड़ी light setup that we have right now. And you're going to see that soon as well. निहायती जुगाड़ी setup. But yeah, without further ado, I'd just like the two people that I just mentioned that are on the video to introduce themselves. Firstly, Yasir, can we have a comment on your Iron Man cheap cosplay? So I think this is not Iron Man. Neither is this Tony Stark. This is MS Dhoni Stark. This is the first Indian Avenger, and my name is. This is my heart thing. I had hoped This is how I operate and stay alive. we're never getting I'm proud Indian of it. YouTube channel views. I like how he said, my name is, this is my heart thing. I mean, You can tell it's 4 a.m. by the way, guys, just by how नींद आ रही है Yasir भाई. looks. And on the other hand, we have Ovais. Yes, I'm OS. Thanks, man. And no, I think... your carpenter OS. No, this pencil is for. No! Hey. I really love chai, by the way. And that's coffee, And that's by the coffee. way. Like, that's coffee. And it's cold since the past couple of hours. Yeah, we've We had need it the there. coffee though at this point. We've had it there. It's for not like, 4, it's 3:15. We've had it there for like 2 a.m. Yeah. So yeah. Anyways, let's get into the meat of the conversation. We just released an announcement video. We just announced that January, February में Comic Con नहीं हो रहा. And what? Ooh, shocking. And I think we've had a relatively good reaction. I expected the world to blow up. I expected someone to come at my door and go like, भाई क्यों नहीं करा रहा Comic Con? भाई क्या हो गया भाई? I think people think it's a bit. I think they still haven't fully realized it yet. You think that they think that we're pulling their leg. No, come on. Boys, नहीं हो रहा. दोबारा बता रहा हूँ. Straight down the camera lens. नहीं हो रहा January, February में. But yeah, I think in that video we were very vague. I think we dived into the topic, but we didn't really fully explain what does that mean. So I think let's clarify on the video. Let's talk about the entire journey of that video first. Firstly, this is like all of our first interaction on camera. पहली बार हम सारे Evidently, clearly, more clearly. This is the first time हम सारे actually internet पे आ रहे हैं. The only person who's speaking, isn't it like कि उसका एक dead YouTube channel है? Go subscribe. They don't, because I'm just bringing that YouTube channel here now. जो बात होती है. Khair, again, none of us have that camera के सामने बोलने की ability. I think किसी की भी public speaking ability नहीं है. Unless he turns into a product manager. Unless Yasir turns into a product manager. And I am Dhoni Stark. I am not product manager. This is 3 a.m. product manager. Okay. And evidently, सबकी निहायती फटी हुई थी before we started shooting. सारे के सारे introverts हैं, unfortunately. Basically एक consistency वाला element हम लोग ले आए हैं. हम लोग हर साल एक specific time of the year पे हम करवा रहे होते हैं Comic Con. अब जब नहीं करवा रहे तो it's obviously a major change, and reasons भी हमने अभी तक तो जो highlight किए हैं. सही है, बता दिया ये था वो था, लेकिन I don't think we've gotten into enough details about it. Which we'll hopefully do as we move along this conversation. Let's say, I think you both raised a really good point कि it's not just the fact कि हम लोग Comic Con January, February में करवाते हैं. I think it's also about the fact कि people look forward to it, because regardless of how many anime comic conventions happen in Karachi अब, जो बहुत अच्छी बात है. Let's be real. Yeah. Let's be real. We get to go to a Comic Con and actually enjoy. Basically, let's be real. At the end of the day,
people really do look forward to our date. People try to save that one big cosplay And for we our event. exactly, and we know that by the DMs we got. Exactly. So based on that, I think the fear factor for us as a group of individuals that host these events was very evident. And हम सब लोग यही सोच रहे थे वीडियो बनाते हुए कि यार how will this be received? Will they understand? Will they not understand? At the end of the day, what we all need to know is that it's more than a decision. It was a gamble. It is. Yeah, definitely. It's a gamble. What we're gambling on, you guys will. Hopefully, yeah. Yeah. Oh. How do you feel for the community right now, though? I mean, I know that everyone's like very confused. Okay, what the fuck? Can we say that? हाँ Yeah, हाँ right. But I. टी लगा देंगे उस पे फिक्र नहीं करो. Anyways, I know everyone's confused. Which I saw that like live in the YouTube live reaction of the video. Everyone's looking forward to that one big Comic Con at the end of the year, and also not just that. Like Huzaifa said, Comic Cons aren't just a place to cosplay. Sorry, my bad. It's not just a place to cosplay. It's also a place to hang out and have fun. So, yeah, people who like it's the place where some friends, very good friends, get to meet each other once a year. लाइक लोग दूसरी हैदराबाद से आ रहे होते, लोग लाहौर से आ रहे होते. मिस्टर मर्चेंट हम लोग का एक बहुत अच्छा स्टोर कहाँ से आया था, लाहौर. Shout out Mr. Merchant. जो बात है, we love you dude. Lahore, I think he came from. He came from Pindi. Pindi, बल्कि इत्तेफाक की बात ये है, तुम्हें पता है वो जापान फेस्ट में आया हुआ था. Yeah, He yeah, came yeah. to Karachi for Japan Fest. And he was like, यासिर भाई Comic Con कब? और मैं कहता हूँ यार पता चलेगा soon. And that goes to show कि like Karachi Anime Comic Con, the name's gonna change वैसे, so I'm just gonna say Geek Haven Comic Con. It stands for more than just a Comic Con, right? So people, but I do think we still gain trust from the community, and they know okay, we're like when we say we're trying for a bigger, better, whatever thing, they trust that yes, we are doing that, and hopefully that will happen inshallah in the near future, as do we. I think for me it's a bit of a mixed situation, 50-50 situation, क्योंकि while हम लोग obviously नहीं करवा पा रहे हैं इस दफ़ा at January, February, and obviously the people are going to be disappointed with it. I am disappointed with it. I miss doing that work, right? वो एक feeling बहुत अच्छी होती है और hectic होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है. लेकिन उसके साथ साथ में दो चीज़ें कंसिडर करने के लिए ये भी हैं कि अभी पाकिस्तान में कराची में स्पेशली रिसेंट टाइम्स में अच्छे खासे कॉमिक कॉन्स उठ के आ गए हैं. तो like I think people have had quite a bit of share of visiting these things in the past month or so. One of them was where we were personally involved as well, which was Japan Fest. तो लोगों के पास like मैंने अभी तक जो कॉस्प्लेयर्स का रिस्पांस देखा है वो इस तरीके का ही है कि वो लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत सुकून में कह रहे हैं कि चलो हमें कॉस्प्ले में काम करने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया, हम थोड़ा बर्न आउट हो गए थे इतने कॉस्प्लेस कर लिए थे. तो एक तो वो था. तो इनिशियल रिएक्शन जो मैंने क्राउड से देखा है वो यही है कि it's a bit of a mixed reaction. Most people have taken it very well, much better than I expected they would. I think that's a great thing because it's going to be a major motivational factor कि जब हम लोग इसको जो हमारे गोल्स हैं अचीव करने के लिए उन पे जब हम लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह तो होपफुली लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो भी बिल्ड हो रही हैं वो कंसिस्टेंटली रहें और उसको हम फुलफिल भी कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लोग नाराज हो गए तो अब हम लोगों को And that's a good thing, right? Like 4 years ago or something, right? When we did Shogun, I think उस year में कोई भी और major Comic Con नहीं हुआ था, No, right? wasn't, Right? And ours was the only one. Like I think एक नहीं, college. उस time we didn't even have a कुछ भी नहीं Chukon. होता था. Yeah, we didn't have a And Chukon. so for example, अगर उस साल नहीं होता तो like नहीं सीन होता Comic Con Yeah, का, right? yeah. लेकिन now year after year नए Comic Cons आ रहे हैं. It's sort of like it was already an existing culture. I'm not gonna pretend like we invented Comic Cons For in sure. Karachi. We went to Comic Con before. Exactly. It was an existing culture, but I feel like we did the event in such a way that people had so much fun and saw so much value in it that it created a boom. We're the Maharaga that came up with the formula. That's Sukuna. We're the Astro Boy of anime, but for Comic Cons. I'm just joking. That's exaggerating. Or is it? Anyways. तो आई थिंक इट साउंड्स अ बिट लाइक कि हम लोग थोड़ा सा बोस्ट कर रहे हैं बट क्या कहते हैं लाइक इवन इन माय अपार्टमेंट आई हैव मेट अ फ्यू पीपल जिनसे जान पहचान है. they're not really into this community at all. They've never been. There's regular Pakistani people
and they come up to me and they go like, कॉमिक कॉन क्या है, मुझे बताओ. और मैं देख रही हूँ कि तुम ये कर रहे हो, क्या है ये. एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू देम, और फिर कुछ अर्से बाद वो मुझे आके कहते हैं, यार मैंने तो वन पीस देखना स्टार्ट किया है, शो है यार, बड़ा मजा आ रहा है यार. मेरी लाइफ बदल गई. मेरी लाइफ बदल गई. तो like it's really nice to see कि this culture is expanding. पहली बात. दूसरी चीज ये है कि अगर मैं स्ट्रिक्टली हमारे टर्म्स में स्पीक करूं, लाइक I think हम लोगों ने एक we've also been able to adapt this approachable attitude where like जब एक जमाना था जब हम ब्रांड एम्बेसडर्स बना करते थे एंड हम खुद टिकट्स सेल कर रहे होते थे, तो उस टाइम पे देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल जो मुझसे आके टिकट्स खरीदते थे एंड मेरे पास आते थे, वो मुझे वो बताते थे, लाइक दे यूज्ड टू फील सेफ इन टेलिंग मी कि लास्ट ईयर जो है मैंने ये चीजें एंजॉय की थी, ये चीजें मुझे लगता था कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकता है. दे फेल्ट सेफ इनफ टू टेल मी दैट, एंड सिंस दे gave us that privilege, we were able to take it in and we were able to make those improvements. उसको आगे लेके जा सकते थे. Like there's this one guy जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी, his name is सुहीर, shout out सुहीर. वो मेरे पास आता था हर साल, वो मुझे बोलता था यार ये सीन है, वो सीन है. हमारा आईटी का तो अब्दुल समी से जो अब्दुल समी के बारे में तो अभी सेगमेंट आएगा भाई. अब्दुल समी शाउट आउट, आईटी पार्टनर. आई फील लाइक हम लोग ये कर करके ना पूरी कम्युनिटी के 5,000-6,000 लोग जो है ना उन सबको शाउट आउट देने वाले हैं. अब्दुल समी तो आई थिंक इज प्रीटी वेल नोन. आई थिंक anime.tk का भी मॉडरेटर है वो भाई, बड़ा आदमी है भाई. हमें अपने प्लान से ज्यादा उसको पता है हमारे. एनीवेज खैर हम लोग लंबी कर रहे हैं ये सारी, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ठीक है, कि ये सारी चीजें साइड में, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि ये सारे कॉन्स हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज लाइक इफ इट हैड बीन स्टैग्नेंट, इफ इट हैड बीन जस्ट अस, राइट, there would be no pressure or drive or any space for us to innovate and make it bigger, better and whatever, right? Like अभी for real, like हमें breathing space मिलेगा अगर हम लोग कौन नहीं कराएंगे. हाँ, like community की तरफ से जो इतना बड़ा backlash अगर नहीं आएगा, वो इसी वजह से नहीं आएगा क्योंकि they've had other comic cons, they've had the chance to cosplay, right? So we have the breathing space to go ahead, take some time and do something else, something, I don't know, maybe more fresh or unique. And maybe something bigger. Inshallah. Inshallah. Khair, enough sucking your own जो भाई बच्चे भी देखते हैं वीडियोस भाई. सॉरी बच्चों. धोनी स्टार्क advocates for kids. Just play the Avengers music on Yasir when he's doing his intro. Dhoni Stark. Khair, aside from the fact that we were all very fearful of what the reception to our announcement would be, we also talked about some things that we're going to be doing in the future with Geek Haven. I think we should talk about that. I think थोड़ी सी light और shit करनी चाहिए कि आगे plans हैं क्या. One of the things that we're obviously working on, you guys are already seeing it through this podcast, content, more content, Geek Haven related content related to pop culture and everything. I think it's something that was always on the cards. And finally, after बहुत सारी ख्वारी है ना Ovais, we're finally rolling out content right now on a weekly basis. I think weekly. I don't know when this is going to go out. I'm hoping it's weekly. But fingers crossed we can keep this going on a consistent basis. But that is one of the ventures we're planning on going on for all other social media platforms. Aside from that, I think I'll let you guys talk about the esports and the merchandise shop that we have in mind. एक सेकेंड. हाँ, about the content, like if you guys are confused कि हम लोग क्या बनाएंगे, तो like we grew up watching Smosh, right? We grew up watching not grew up like, but we've been watching offline TV. So yeah, some of you might know the Anime Men, right? So imagine all of this rolled into one Pakistani desi style, like हम लोग की तरफ से content house. So we'll do anything that's fun, anything that's related to us, anything that comes into our mind. We'll try to involve you guys as well. Hopefully. Are we going to talk about the platform? Sure. So yeah, I don't think we've announced it yet. We haven't announced it yet, but we do plan on creating a Discord server for the community as we move forward. We don't have an exact date for it right now. We don't have an exact time कि कब होगा launch, but it is something that we're working on. And उसका main मकसद यही है कि involving you guys from a behind the scene perspective, maybe giving you early access, maybe giving you the chance to be in one of these videos, in different types of contents that we're going to be doing as we move forward. Letting you guys interact on the Discord server with other people from the community, because I know that is something जो लोगों को Comic Con में बहुत अच्छा लगता है, getting to meet like-minded people, having that facility, सहूलत Discord पे 24/7. I think that'd be really cool. And aside from that, it would basically serve as a very nice gateway
for you to interact with us कि हम कर क्या रहे हैं. Imagine a Pakistani Lawai channel like Discord पे उसमें memes होंगी full meta community वैसा वाली. I think half of those memes would revolve around इसको AOT क्यों नहीं पसंद. Anyways, e-shop, Geek Haven shop, हाँ, whatever. before I get to that, I just want to add one thing on the Discord discussion, which is कि हम लोग चाहे कॉमिक कॉन कर रहे हो, चाहे ई स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे एनीथिंग एल्स, हमने अभी वन पीस की स्क्रीनिंग की थी, हम और स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, गीक हेवन की शुरू से लेके एक कोर वैल्यू हमेशा रही है, एंड इट विल बी consistent for every single venture that we're doing, which is keeping it community driven. And that is the key factor that comes into Discord, into content, into literally anything we're doing. क्योंकि हम हर चीज़ में community को साथ लेके चलने का इरादा है हमारा. और वही वाली बात जो हमने अभी कॉमिक कॉन के बारे में भी की कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, कल्चर बढ़ रहा है, ऑल दोस थिंग्स, तो अब वो ये इधर भी लेके आना है, वो इधर भी क्रिएट करना है. Can I just add one thing on that? We always go about community, right? What do we actually mean by that, right? So obviously it can mean a lot of things, but one main thing is that we actually get second-hand enjoyment seeing you guys enjoy our things, right? Like we don't get to, right? Obviously, because like we're busy in managing stuff, he's busy in hosting, he's busy in other things, right? But like just watching you guys enjoy the shit out of all of those things, right? Being involved in all of this, we get second-hand enjoyment, right? Genuinely. ठीक है, तो that's like one of the aspects we always look forward to कि लोगों को मज़ा आएगा या नहीं मज़ा आएगा, क्या हम लोगों को मज़ा आता है या नहीं मज़ा आता. And I think after everything is done, like अगर मैं Comic Con की ही बात करूँ, after everything is done and when people go on to your DMs, people go on to comment section, people start posting about it and they'll actually say that they had fun with the event. I think that's probably one of the most important moments for us. I think that's the highlight of all of our days क्योंकि क्या होता है एंड में कॉमिक कॉन खत्म होता है, हम लोग सारे एक दोस्त के घर जाके क्रैश करते That हैं. is straight up our therapy session. और फिर वहां पे I एक swear. दोस्त बैठ It के is- फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलता है and he's just reading all of your flowers that you've sent us हम because लोग- the event was really nice. That is all that it takes to make us happy. He's so right now. हम लोग full traumatized होते हैं in the last 3 days, right? We can't even speak. ठीक है, हम लोग खाली बैठे हुए होते हैं और एक बंदा जो है रिव्यूज पढ़ रहा होता है या पोस्ट पढ़ रहा होता है and we just like smiling और बस पढ़े हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं and we just smiling. And before we started boycotting KFC, साथ में बराबर में एक माइटी पड़ा हुआ था. अरे यार इस बार नहीं अब होगा. से कबाबजीज खाएंगे, कबाबजीज खाएंगे. Still KFC, but Hashtag कबाबजीज support fried chicken. local. Support local. Crispy Bro sponsor us. खैर, Geek Haven shop. Right. This is something जो कि पता नहीं कब से it's in the works, पता नहीं कब सोचा था कि हाँ भाई merch का कुछ करना है. I just want to add something on this. Looks at OS at कब से सोचा Literally है. looks at OS. तो उस पे हमने काम करना स्टार्ट किया while back and we've made a significant amount of progress on that front. We have a production line ready to go. We have a campaign planned out, designed, created. थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बना हुआ, लेकिन बन जाएगा. तो वो फिर बना के इरादा है, we're going to launch a proper shop and we're going to have a website जो कि थोड़े अरसे पहले होनी चाहिए थी, but yeah, इस पे that's actually sad considering a lot of us are CS graduates, but still. Let's not anyways, get into yeah, that, yeah, वो थोड़ा गलत. वो मेरा FYP project था. मेरे भाई बहुत रियल हो गया, बहुत रियल हो गया. Anyways, so this is what's going to happen and it's going to happen sooner than you think. Inshallah, considering. खैर, तो merch is launching really soon, hopefully. Merch का सीन ये है, obviously आप लोग मतलब one factor to consider would be कि भाई अभी हमारे पास कितने सारे जो है वो इस industry vertical में कितने सारे लोग इस पर काम करें and they're doing amazing things. There are awesome brands that we ourselves use. Basically there's this thing, Comic Con का जो एक था कि Comic Con हम लोग क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे Comic Con में जाते थे वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती थी जो हमें लगता था these are areas of improvement that we would want to see from as a member of the audience. वही चीज़ हम अपने Comic Cons में लेके गए, हमने वो एक्सपीरियंस रेप्लिकेट करने की कोशिश की जो हम चाहते थे कि हमें मिले. तो हमारा सेम बिल्कुल प्रिंसिपल जो है वो मर्चेंडाइज का भी है. वी आर गोइंग टू डू द एब्सोल्यूट सेम थिंग ओवर देयर. वी हैव अ रियली यूनिक लाइनअप प्लान्ड. सो आई थिंक अ हिंट फॉर दैट वुड बी, so basically Geek Haven's
Geek Haven की brand identity में शुरू से there's been this thing that we have a Tory gate in our logo. It's going to be really connected to that. It's right here behind us, here, there, behind Huzaifa as well. So that is going to be a focal point of Football. it. Not necessarily the gate itself, but a lot of amazing elements that belong to it. तो उसके साथ हमारा लाइनअप इट विल रिलीज सून इंशाल्लाह काउंटर बढ़ गया but yeah, so that's that on the shop front. The one thing I want to add on that, There we go. There's the counter. लेकिन वैसे generally it's not just के like merch में obviously I don't know पहले lineup में हो पाएगा या नहीं, लेकिन उसमें भी we plan on ways to involve The community. yeah. Like not just the community, big people from the community and the community itself. Maybe on the Discord channel, there are a lot of things we could do, but yes. Also, Too soon to talk about that, but yeah. Also, guys, that is where Yasir turned into product manager. Yasir, नहीं यार, come I hope you on. guys understood that. Okay, let's move on. I think the biggest thing we talked about in the video was Comic Con नहीं हो रहा. I think थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं कि जनवरी फरवरी में क्यों नहीं हो रहा, 2024 का क्या सीन है, थोड़ी सी insights. Spicy वाली. Like, let's not reveal too much. Fine. What do you want me to say? I don't know, a bit about किसको बुलाने का इरादा है. I mean, a certain someone in the video said कि international जाने का इरादा है. Late Horizon concert, here we go. Nothing's confirmed by the way. Yeah, We're just trying. Late Horizon, please sponsor. Please sponsor us. Okay, let's talk about the delay in the Comic Con. क्या scene है? Okay, the cut was because Yasir को नींद आ रही है, but here's a big reveal. हम लोग next Comic Con we are planning to go to Expo Center this time, right? और Expo Center में कराना इस scale का is massive. सही है, उसकी logistics, उसके finances are massive, right? उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी. It won't be like we can't do that without sponsors. We can't do that without investment, and that's the majority of what we're trying to do at this point in time. Why though? Because it's not just about bigger footfall and like इस तरह की चीज़ें. Obviously, a bigger Comic Con would mean कि हम लोग उसमें इंटरनेशनल चीज़ों को किसी तरह से ऐड करने की कोशिश करेंगे. सो फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है. बाहर से लोगों को बुलाना, बड़े कॉस्प्लेयर्स को बुलाना, ऊँचा बोलो, ओके सॉरी माय बैड. एनीवेज, बड़े कॉस्प्लेयर्स को बुलाना सही है. ऑल्सो क्या नाम है, दिस टाइम अराउंड कॉमिक कॉन में वी आर गोइंग टू ऐड वन वेरी 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 बिग डिफरेंस. सही है, इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ गेमिंग एस्पेक्ट टू इट. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन थोड़ी सी टाइम में, बट देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर गेमिंग लीग. सही है, प्रीफेसिंग द 2 months बिफोर द कॉमिक कॉन. और उसका जो फाइनल होगा, और वो वी आर होपिंग कि वो उस स्केल पे हो सके. वी आर ट्राइंग टू कि हम लोग कॉमिक कॉन के साथ करा सकें. सही है, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो मिल के इट्स गोइंग टू बी इनसेन, एटलीस्ट द वे वी प्लान्ड इट. दैट्स प्रीटी मच इट. इसमें एक और चीज़ ऐड करने के लिए ये भी है कि ओएस की बात पे ही ऐड मैं करूँगा कि व्हाट ओएस वाज टॉकिंग अबाउट वाज फाइनेंसेस. और इसमें बेसिकली कॉमिक कॉन पाकिस्तान में एक बहुत ही नीश चीज़ है. इट्स वेरी अनहर्ड ऑफ, पीपल आर नॉट वेल अवेयर, लाइक नॉट टू अवेयर अबाउट इट. तो वहाँ तो उसकी वजह से हम एक जगह पे जो मार खाते हैं हर साल is the ability to secure sponsorships or funding in order to execute these events. So far बहुत सीधी सी अगर बात मैं बोलूँ तो वो ये है कि we make absolutely no money out of this. We have made no money out of it in all of the years that we've been organizing Comic Con. और इसमें जाहिर सी बात है, एक समझने वाली बात है अब कि we're adults, we're graduates, we're working jobs, we need a sustainable way to take this forward. हमारी जिंदगी इतनी फारिग नहीं है और we have futures to plan as well. तो ये चीज़ हमें लेके जानी है. I was having flashbacks, man. तो ये मसला जो है ना, बेसिकली क्योंकि ब्रांड्स वगैरह को ना ही इस चीज़ की अवेयरनेस है, और अगर है भी तो उनको नहीं लगता कि उनकी टारगेट ऑडियंस को होगी. तो इट्स अ वेरी हार्ड सेल टू गेट स्पॉन्सरशिप्स फॉर दिस. सो फार हम लोग बहुत करीब पहुंचे. लास्ट ईयर वी वर दिस क्लोज टू सिक्योरिंग देम. फिर हमारे पास एक नया मसला आया जो कि है पाकिस्तान की क्रम्बलिंग इकोनॉमी, विच इज़ वाई क्वार्टरली बजट्स कट हो गए कंपनीज के, हमें नहीं मिल पाया. तो दिस इज समथिंग जिस पे हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम उस पर काम करें, ताकि उसके बेसिस पे हमारे पास वो फंडिंग आए, वो
वो फाइनेंसेस आए जिसपे हम एक्सपो सेंटर जा सकें, क्योंकि अभी तो एज ऑफ राइट नाउ इट्स जस्ट अ ड्रीम, वो हमें आगे लेके जाना है. तो या Like we said at the start, it's a gamble. I like how well जब serious हो जाता है सवाल like we said start to gamble हाँ. खैर eventually आई वही वाली बात We're going to do a Comic-Con, guys. वही वाली बात है कि like we said in the video previously कि बड़ा कराना है, बेहतर करवाना है, पैसा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं. And I think it's pretty understandable, and like I said before, hopefully you guys do get to see something in 2024 as we move along. Inshallah, you'll get to see updates and stuff. I've been saying it's a gamble, right? CAC 2023 was a gamble, right? I swear. It was a gamble. क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे उसकी डिटेल्स, but the fact कि वो उन्होंने pull off किया इस तरह से, it was a miracle, right? Who knows, miracles can happen twice, you know. I like how Ovais मुझे सेगवे नहीं करने देता और बोलता है हम आगे जाके बता देंगे. मैं सेगवे तैयार करके बैठा हूँ. नहीं, हम थोड़ी आगे बता देंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है. खैर, on the note of CAC 2023, on the note of Comic Cons and stuff, let's talk about the fact कि एक Comic Con हुआ था, we pulled it off. I think you two were the main people जो pulled major of the weight. I'd say 80% of the Comic Con is sitting on that one sofa. No lies there. I mean, it is what it is. Background में यही दो लगे हुए होते हैं. I just want to ask two things from both of you. What is you do basically? Some frustrations that you had while working on it. सही है. Genuine frustrations. And a few of your favorite moments that you have, either while working on it or from the Comic Con in general, because I know all three of us have very different takes on Comic Con में चल क्या रहा होता है, क्योंकि हम तीनों at that one particular moment कोई different area में होते हैं. So yeah, a bit on that. We already talked about it थोड़ा सा. I talked about it थोड़ा सा. I'm so done with him just going like we already talked about it. लेकिन थोड़ी आगे जाके फिर करेंगे. We're going to talk about it. भाई इंसान का बच्चा बन जाए यार. So मेरा ये सीन था कि I've been responsible for marketing the event and for every single design and video. एक मिनट on that note, जैन हम लोग अपने डिजाइनर को कितने पैसे देते हैं? ₹1. Thank you. इंक्रीमेंट लगा था 3 रुपए हो गए थे उसी दौरान. नहीं 2.5 से पहले थे भाई. सही है यार. खैर, so this is what I've been doing. I've basically been the guy in the chair for Geek Haven for as long as I can remember. बल्कि मैंने शोगन के जो हमारे पोस्ट जा रहे होते थे वो पोस्ट बना के तो मैंने फोटोशॉप यूज करना सीखा था. So since then it's been a long journey. I think in the previous Comic Con मेरे दिमाग में अभी off the top of my head there are 2 moments that come to my mind that were really good moments. One was with Ovais and one was with Huzaifa. So जो पहला वाला था वो ये था कि हमने जब Comic Con को अनाउंस किया था, when we made that Heroes Come Back वाली video, that was peak, क्योंकि we pulled that idea out of absolutely nowhere. एक हुज़ैफा का आइडिया था हमारे पास, उसने बोला था ये कर देना, और हमने बोला था okay got you, but we did not do anything of the sort. हम कुछ और ही अलग करके आ गए. हुज़ैफा did not like it one bit, but everyone else loved it so much. We loved it so much. हमें तो भाई दिल आ गया, उसी भी खत्म हो गए ना, मतलब सब हो गया. वो आइडिया भी फोर्स था. इतनी तबाही वीडियो थी वो. वीडियोस दिन बननी भी नहीं थी. It was again a gamble कि बननी नहीं थी, पोस्ट नहीं हो रही थी, पोस्ट कर दी. Yasir and Ovais sucking their own counter too. ग्लुब ग्लुब. तो दूसरा ये था कि KCC में there was this Panaflex stalls एरिया में जो कि बहुत एंड मोमेंट पे आ गया था और हमने वो भेजा नहीं था, and it just had to be sent क्योंकि वो टाइम पे प्रिंट होके नहीं आता, and we were sitting blank and we had no idea कि उसमें करना क्या है. And I think 80% 90% डिजाइन्स ना हम लोग इसी तरह बनते थे कि बस आखिरी सेकंड पे ना अचानक से कुछ क्रिएटिव स्पार्क आई और धड़ाधड़ कुछ बन गया और एपिफनी लिटरली. So that's what happened. Huzaifa मेरे साथ मेरे घर पे बैठा हुआ है, हम लोग बस सोच रहे हैं क्या करें, and then we just pull this idea out of our asses और बस वो बना के इतना प्यारा जबरदस्त सा Panaflex बना, and it came out so well. So that was a really nice moment. फिर during the Comic Con तो mostly frustration ही होती है देखने को. I don't think over the past 3 Comic Cons I haven't seen anything happening, no activity happening, because I'm just running around चीजें मैनेज करने में ना I don't know what's happening at all. सिर्फ एक चीज थी जो मैंने देखी थी, and I was so glad I saw it because I think that was probably the highlight of Comic Con, which was the
एंडिंग ऑफ एनार्कीज परफॉर्मेंस जिसपे उन्होंने हीरोज कमबैक का सेगमेंट किया था पूरा के, इट वाज सो फकिंग गुड. इट वाज समथिंग जो हमने पहले तो नहीं देखा था. तो वो एक इंतहाई यूनिक जबरदस्त चीज थी. I'm gonna just suck my own here. My idea. Yeah, definitely his idea. And Tashi and the boys effort. Yeah, definitely. So- Taking nothing away from them. बहुत अच्छा था. That was really good. तो बल्कि अब देखे लिंक्ड होराइजन के साथ एनार्की है. तो ये सीन है आगे के लिए. Blood really just नहीं आगे के लिए मैं गलती से बोल दिया भाई, कुछ नहीं पता हमें. Blood But, really just said Linked Horizon आ रहा है. Iraqi backup dancers. Anyways, तो फ्रस्ट्रेशंस तो बहुत हैं. मैं गिनवाना शुरू करूं तो पता नहीं कितनी जाएंगी. तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ फ्यू. ऑब्वियसली ये इतनी हीट ऑफ द स्पर ऑफ द मोमेंट वाली चीजें होती हैं कि थिंग्स गेट हीटेड क्वाइट ऑफन. हम लोग के आपस में इतने फड्डे होते थे और काफी दफा वो फड्डे बहुत सीरियस हो जाते थे. तो वो ऑब्वियसली एक पेन पॉइंट होता है. बट इट्स जस्ट व्हाट डू यू कॉल इट, समथिंग ऑफ द ट्रेड कुछ बोलते हैं ना. ट्रिक ऑफ द ट्रेड है वो होता ही है. तो दैट्स दैट. उसके अलावा यही होता है कि कॉमिक कॉन आई डोंट गेट टू एंजॉय माय ओन इवेंट अनफॉर्चुनेटली, बट आई रियली एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग इट, सो दैट कैंसल्स दैट आउट. उसके अलावा कुछ फ्रस्ट्रेशंस हमारे पास ये होती हैं कि कभी कभार थोड़े let me say frustrations because मैं full उसमें आ गया हूँ. You guys haven't highlights, right? I'll tell you highlights. सही है. हम लोग अनाउंसमेंट वीडियो में बात कर रहे थे, उसमें तो बड़ा चिल चलता है. मैं तो लोगों को बताता हूँ. सही है. इस कॉमिक कॉन में I didn't sleep before the Comic Con for 2 straight days. इस कॉमिक कॉन से एक हफ्ते पहले I stayed at Huzaifa's place for like a whole straight week and I didn't let him sleep either. सही है. और हम लोग पूरे दिन निकले होते थे, काम कर रहे होते थे. इस कॉमिक कॉन में पिछली शाम से लेके अगले कॉमिक कॉन के डे एंड तक मेरे फ़ोन में स्टेप्स ऑन थे, राइट. एंड आई बिलीव इफ आई रिमेंबर करेक्टली कोई 50,000 प्लस रजिस्टर हुए थे एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. There's going to be that one dude on the comment section that goes like, ये तो मैं 2 दिन में चल लेता हूँ. Anyways, क्या नाम है, लॉजिस्टिक्स की ज़्यादा बात की जाती है ना, तो लाइक पूरे कॉन में हम लोगने जितनी भी खौरी करी है, जितने भी काम करे, कॉमिक कॉन से पहले आई थॉट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, दिस इज इट, अब फ्लॉलेसली जाएगा. कॉमिक कॉन के दिन पे वी हैड टू लाइक डू इट ऑल ओवर अगेन. सही है. पीपल से कि इवेंट मैनेजमेंट वगैरह ये सब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही होती है ऑन द फ्लाई, राइट. एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस. मैंने इसमें मजदूरी की है कॉमिक कॉन में. You guys haven't seen my face on camera. You guys have always seen Huzaifa या Yasir, right? But you might remember me as that one guy जो कि कॉन के बीच में एक बहुत बड़ा सा टेबल लेके जा रहा होता था इधर-उधर. Because like किसी का randomly टेबल खत्म हो जाता था, मुझे लाके देना पड़ता था. You guys also remember me कि मैं आर्ट्स काउंसिल के एक खोपचे से प्लास लेके निकल रहा था क्योंकि लाइट बंद हो गई थी and no one was willing कि वो जाके लाइट ऑन करेंगे और मैं अंदर घुस के लाइट ऑन कर रहा था. You guys also remember me. क्या बता रहा था? Highlights, right? कैट 22 में. अच्छा हाँ, इस बार यू गाइस माइट हैव आल्सो नोटिस कि मैं स्टेज पे गंदी बाथरूम की चप्पल लेके घूम रहा था. देयर वाज अ रीजन फॉर दैट. द रीजन फॉर दैट वाज कैट 2022 में मैंने शूज पहने हुए थे. सही है. और जितना चलना पड़ता है उस चलने के बाद व्हेन आई टुक माय शूज ऑफ, मेरे लाइक थम्स जो नाखून जो थे तो उसके वो डेड हो गए थे. और फिर उसके 1 महीने बाद मेरे नाखून निकल गए थे. एंड देन मैं कोई आधे साल तक दोनों पाँव के नाखूनों के बगैर घूमता था. सही है. और मैं लोगों को दिखा रहा था ऐसा कि ये देखो मेरे दोनों नाखून नहीं है, क्योंकि मैंने कॉमिक कॉन कराया था. फ्लेक्स है ब्रो. उसके तभी मैं चप्पल पहन के घूम. What's that line? ये flex नहीं. ये रियल है, मेरी लाइफ है. पहले हम शाउट आउट. Anyways, that is why मैं क्या हमारी अच्छी खासी टीम चप्पल पहनी हुई थी. अमर knows my team. Shout out Amar. मोए शाउट आउट. और हाइलाइट्स में there's this one picture somewhere, I think यासिर के फोन पे या कहीं, एक कौन खत्म हो गया और सब लोग घर जा चुके हैं. ठीक है. हाँ, उसने पैनाफ्लेक्स बोला तो मुझे याद आया था. ठीक है. और सारे पैनाफ्लेक्स होता है वेन्यू के और वो एक जगह पे ऐसा पाइल रखे हैं. ठीक है. और हमारी पूरी टीम लाइक हम लोग पूरे वेन्यू में लाइक पड़े हुए थे. सही है. और उन लोग को सीट्स उठानी थी, सोफास उठाने थे. ठीक है. तो हम लोग को वो उठाए जा रहे हैं इधर-उधर एंड देन एट द एंड हम लोग सारे उस पाइल पे आके पड़े हुए, जस्ट अ ह्यूज सा पैनाफ्लेक्स का पाइल और सब पड़े हुए मरे हुए जस्ट वाचिंग द स्टार्स. If we can find that picture, please do insert it. जो बात है. Let's talk about the happy memories. खैर हाँ, तो majorly we're just talking about के what do we do at the Comic Con. I think we've clearly get the picture कि Yasir is the guy in the chair, Ovais is the guy who runs around and handles the management side of things and logistics and everything. And जहाँ तक मेरी बात आती है, I'm just handling creatives. क्या क्या कर सकते हैं हम कॉमिक कॉन पे गाइस. That's majorly my shtick.
aside from that I just hang around with Ovais and Yasir जब इन लोगों को नीड होती है. एक बंदे की बाइक के पीछे बैठ जाता हूँ जब वो पूरा कराची घूम रहा होता है, एक बंदे की कुर्सी पे बराबर में बैठ जाता हूँ ताकि उसके साथ डिज़ाइन वगैरह में हेल्प कर लूँ. वैसे इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स बिकम अस, क्योंकि हम लोग टाइम निकाल के वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे पूरी टीम. Exactly, that's what I was leading to. सही है, वो लोग ही के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, जस्ट मैनेजिंग मोस्ट ऑफ इट, राइट? Basically. सही है. बेसिकली लाइक इवन इफ वी हैड हायर्ड हेल्प, राइट, अगर हमारे पास हायर्ड हेल्प भी होती तो भी जो हम लोग का कॉमिक कॉन होता है उसकी जो सोल और उसकी जो स्पिरिट होती है, जिस मजे से वो हो पाता है, इट वोंट बी पॉसिबल विदाउट दीज पीपल, विदाउट आवर कम्युनिटी, विदाउट आवर वॉलंटियर्स. शॉट आउट टू द वॉलंटियर्स मैन. काउंटर बढ़ा दो कोई मसला नहीं है, लेकिन शॉट आउट टू द वॉलंटियर्स. And I'm glad you mentioned that because that's the main thing, right? The reason why the Comic Con can happen and does happen is because कॉलेज से दोस्ती चल रही है, सारे बॉयज बोलते हैं हाँ यार दोस्ती यारी, चिलिंग्स, वाइब्स, आ जाओ. ये जो कल्चर बना है, ये बना ही इसी के थ्रू है. I don't think we would have been able to pull any of this off अगर हम लोगों को यूनिवर्सिटी के बाद ऊपर से आती कि यार इसमें पैसा है, हम लोग रैंडम बंदे उठाते हैं और कॉमिक कॉन कराते हैं. नहीं होता. अगर पैसों के लिए कर रहे होते तो बहुत ही बड़ा फेल था. हाँ, डेफिनेटली. I mean, literally इसी वीडियो में अभी 3 लोग सामने बैठे हैं जो बनवा रहे हैं, हम जो like, बात आगे दे रहे हैं हमें literally, पूरी चीज़, हम And बैठ के बातें कर रहे हैं. That's on literally on the promise of a better वो future कि हमारे उसमें Comic Con like Geek Haven can become a thing, right? No, I think that's wrong. I don't even think it's on the promise for a better future. I just think it's based on के boys है तो free आती है. हाँ, sure, I mean, but come like on. definitely you're right, but still like the reason we put in that extra mile, Yeah, definitely. the reason we're going for a better Comic Con, right? It's because के we're hoping के somehow in a very hostile environment like Pakistan we can still make Geek Haven a thing, a proper company which can employ you guys in the future. So yeah. That is so kind of you. Oh my man. god. Generally, that's a dream. Where were we? We were talking about Arts Council. We were talking. No, on that front, हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे वैसे? Arts Council. नहीं, Arts we Council were के talking about the team. and- Yeah, the team. तो हाँ, obviously वो वाला सीन तो है कि we want to take Geek Haven to the next level. एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ पे इसका कोई स्कोप नहीं है. We want to be that beacon of hope for all the lads that want to do something outside of the box. So Middle East Comic Con we're coming for. क्या ना वो सीन तो है. बाकी मेरे अपने कॉन के मोमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू टू. तुम एक बंदा हमारा जो है स्टॉल्स के पास घूम रहा होता He है. has all the good moments. लाइक यासिर इज ऑन द स्टॉल्स वाला फ्रंट से. यासिर भाग रहा होता है स्टॉल्स वालों के पीछे, फिर वो भाग रहा होता है हमारे फोटोग्राफर्स के पीछे और वीडियोग्राफर्स के पीछे कि भाई ये शूट करो, भाई इसका कंटेंट बनाओ यार, ये लाइव क्यों नहीं जा रहे हम लोग. और फिर वो भाग रहा था इरफान से पिक्चर लेने. एंड फिर यासिर का आखिरी काम होता है कि मैं जो है इनवाइटेड इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहा हूँ काम करने, एंड ही जस्ट देयर 2 घंटे उनके साथ In my defense वो काम मुझे दिया गया था. एंड यासिर अब इस पॉइंट पे जो है मिस्टर पाकी को बिलाल भाई बोल के बुलाता है. बिलाल भाई, my best friend. काजी अकबर को काजी भाई बोल के बताता है. इरफान जुनेजो को भी इरफान भाई नहीं बोल सकता, इतनी नहीं इरफान भाई. क्या बात है. खैर हाँ, तो यासिर के तो ये वाले मसले होते हैं. ओवैस के जो मसले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर आपका इवेंट 8 घंटे 9 घंटे का है जो 2 से 10 तक अगर चल रहा है, तो ओवैस इज गोइंग टू बी एट द वेन्यू रात से 6 बजे, पिछली रात से. सही है. और 6 बजे से लेके 9 बजे तक ऑफ द इवेंट ओवैस क्या कर रहा होगा, बस भाग रहा होगा इधर उधर, उसको पता भी नहीं होगा इवेंट पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो बस बैठ के आग बुझा रहा होगा. लिटरली. I keep the machinery running, right? क्योंकि चीजें like fall apart वो उनको करना पड़ता है. एंड बीच में ओवैस 1 घंटे का ब्रीदर लेता है क्योंकि उसको जो है वियतनाम फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और उसको ज़रूरत होती है. सही है. ब्रो मुझे इस बार हमारे रेस्ट रूम में बाउंसर जाने नहीं दे रहा था. मैंने उसको बोला भाई हमने तुम्हें हायर किया है. अरे speaking of which, why are bouncers called bouncers? Because they bounce. खैर, that's the lack of sleep speaking. Yeah. And फिर मेरा जो काम है that is basically जब तक स्टेज स्टार्ट नहीं होता तब तक थोड़ी सी भाग दौड़ करना, उससे एक रात पहले ओवैस की हेल्प करना, फिर ओवैस मुझे डंडा मार के घर भेजना क्योंकि तेरा काम है स्टेज पे होना. He was vomiting 3 hours before the stage started. एक मिनट, let me get to that. Come on. तो मेरा काम usually revolves around the stage, right? You guys know that already. तो मेरा जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट होता है इट इज़ ऑलवेज के कॉमिक कॉन की होस्टिंग स्टार्ट होने से पहले, लिटरली आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मेरा एक ही स्टेट होता है हालत का, विच इज़ मी प्यूकिंग लाइक क्रेजी.
क्योंकि इधर मेरी तबीयत खराब होती है और इधर आई एम जस्ट रियली नर्वस. आई डोंट नो ईदर ऑफ द टू. एंड इवन ड्यूरिंग दैट हालत में रोज बोलता नहीं मेरी जरूरत है यहाँ पे, और फिर रोज बोलता है नहीं तेरी जरूरत अगले दिन है स्टेज पे, घर चला जा. और मैं हमेशा लड़ता हूँ इससे. Every damn year. Every time we fight about this. लड़ाई करके इसको भेजना पड़ा था. And this year was no different. I almost overslept because मेरी तबीयत इतनी खराब थी and I almost didn't show up at all at the event क्योंकि मेरी तबीयत शार्ट थी, but I did. And Shout out the to the rest 3 is hours of history. sleep that you got. Huh? Shout out to the 3 hours of sleep. Shout out to the 3 hours of sleep I got. And बाकी हाँ मेरे favorite moments revolve around like my favorite thing, चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाए event पे, the amazing cosplays, anarchy performing, blah blah blah. हमेशा से शोगन से लेके KACC 2023 तक एक चीज़ always stands out. Me having a microphone in the hand and just asking what anime opening do you want me to play next. That is always my greatest, that is the greatest feeling. Because it's such a simple thing if you think about it. I'm just asking a group of introverted people कि जानी कौन सा गाना सुनना है, and how can people be so hyped about it कि I just go into the crowd and I just point a mic to them and it's so many voices. एक तरफ से बोल रहा है वन पीस की वो वाली ओपनिंग, एक तरफ से बोल रहा है FMA की वाली ओपनिंग. Do you remember the last opening we played, right? And it was बहुत hype scene था. तो कोई 5 मिनट का ब्रेक था, अजान हुई थी और समथिंग, और लोग सब लगे हुए थे कि हाँ ये वाली ओपनिंग चलाओ. और there were 2 big crowds. एक वन पीस का था और एक जोजोस बिज़ार एडवेंचर का था. And like they were going to riot. और मैं बीच से गुजर रहा था and you pulled me up on stage and you were like decide. और सोच रहा है किससे पिटूंगा आज. And it's so funny क्योंकि पता क्या होता क्या है, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, I'm like pointing a mic at people कि कौन सी ओपनिंग, and they're all just going like जो वन पीस ये वो, and अगर मैं उनका नहीं लगाऊं, इधर से एक गाली इधर से दूसरी गाली, वाला हमें क्या चल रहा है मेरे साथ. So that's like definitely my favorite moment. खैर, I think that's enough moments. I think that's enough moments. I think that's enough about Geek Haven Comic Con in general. I think that's enough sucking for today. And yeah, I think this was a good intro into what we can expect from podcasts as we move forward. I hope you guys enjoyed this, and if you want to see more of this, do let us know. If you want to see these two back on future videos, let me know. And yeah, like, share, subscribe, YouTube plugin, and yeah, that pretty much is it. I'm Never in my life did I think मैं बैठ के like, share, subscribe बोल रहा हूँ. Never in my life have I ever done outros, and I'm very horrible at them. But yeah, thank you for watching. Tata. Geek Haven की जो है second policy कहती है कि violence is a must. जो बात है. खैर, I hope you guys enjoyed this video, and I hope you guys get and I hope you guys get to see more from us in the future. बहुत chaos हो रहा है क्योंकि अब रात के 6 बज रहे हैं. अल्लाह हाफिज. जो बात है. Oh God. That's a wrap, guys.